Samira Cardoja has asked, please tell us more about Jordan's method. See, there is no Jordan's method. Actually, Jordan एक तरीके के ऑर्थोटिक मेकर थे. You can call him as a inventor or maybe the scientist. तो अगर आप उनकी बहुत सारी किताबें हैं, जितनी भी आपकी ये बनी हुई हैं, जितनी भी ऑर्थोसिस और ब्रेसेस बने हुए हैं, most of them are based on Jordan's principle. Most of them, I think all of them are based on Jordan's principle. तभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो पूरा एक तरफ से एकदम स्ट्रेट होता है, दूसरी तरफ से आप नी पे नी कैप बांधते हैं ताकि वो नी भी बाहर ना आए और पीछे भी ना जाए. So these are those things. या आप किसी भी करेक्टिव डिवाइस को लेंगे तो वो एक तरफ से फ्लैट होता है, दूसरी तरफ से there is a different force which can make them aligned. Pooja has asked, for which weak cat and camel and other core strengthening exercise can be done? Sir, can you please repeat the question? I'm sorry. From which weak cat and camel and other core strengthening exercises can be done? After 10 weeks, when the patient is able to walk independently without any kind of support, then only. Because अगर आप directly knee bending कराते हैं तो प्रॉब्लम होगा कि ग्राफ्ट पे और पेशेंट को बहुत ही weird से सेंसेशन आते हैं, because after surgery there is like a good sensation problem for 6 weeks. So we can't take risk in that circumstances. We have to, before that we can start like tummy tight and crisscross for core. Even we can go for the pelvis stabilizer exercises, which we can do in the supine. Even we can go for glute contraction. That is also one of the best. It's called Kegel exercises या Kegel exercises बोलते हैं. These are the best exercises. We can start as early. तब तक हम ये सारी चीजें नहीं ले पाते. Aishwarya Kasyup has asked, ma'am, can we use Lachman's test or anterior drawer test for ACL injury besides MRI of knee? See, what's her name, sir? Aishwarya, right? Yes. Aishwarya, this is possible, but the thing is, the accuracy of the fibers you can only make out by the help of MRI. अभी बहुत recently ये हुआ है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका मतलब आई जस्ट सीन राइट नाउ लाइक 4 to 5 पेशेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनको पेन इतना नहीं था बट उनका लिगामेंट पूरा टॉर था, पूरा का पूरा लिगामेंट रप्चर था. इन दैट सर्कमस्टांसेस वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ accuracy. And the other thing is anterior draw test. Anterior draw test partial में भी थोड़ा पॉजिटिव आता है. एक्यूरेसी इसलिए लैशमैन में पता चलती है बिकॉज आप होल्ड करके उसको परफॉर्म करते हो. सो देयर इज अ बेसिक मेथड फॉर लैशमैन और इसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं कंपैरेटिवली टू एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट. दिस इज द रीजन. Pooja has asked, any method to predict grade of ACL injury on field in between match? या 100%. मैंने आपको बताया कि आप बेसिकली लैशमैन के ही टेस्ट से आपको पता चलेगा. अगर लैशमैन आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आपको पटेला की इंस्टेबिलिटी, दो चीजें हैं. सी, पटेला की इंस्टेबिलिटी अगर आपको चेक करने आती है, यू कैन परफॉर्म पटेला स्टेबिलिटी टेस्ट. अगर आपका पटेला इज एबल टू होल्ड, दैट मीन्स इज grade 1 if it possible. आप मान के चल सकते हैं. बट इफ grade 3 or grade 2, patella is not able to hold. You can't contract the isometrics, and even the lashman is positive अगर आपका है तो. बस सबसे बेस्ट चीज है कि आप पहले उसके लिए patella stability test परफॉर्म करें and then you can go for lashman. At the meantime you can go for the other test also, so you will get the proper thing कि भैया आपका कौन सा ligament गया है. But this is the actual thing. Whenever when anything happen to the knee, first go with the patella. It will give you the direction how to diagnose and what is the next level of diagnosis. Next question from Ayushi Misra. Can we give cryotherapy for second and third week of subside pain? Throughout the rehab आप दे सकते हो. See, by the way, I just want to ask her. She was talking about
she is talking about the icing or she is talking about that equipment जो आप proper cryotherapy का आजकल आ गया है, which is useful for the वो frozen कर देता है type. She's asking for what? Ayushi, can you just specify your question? जी आयुषी आयुषी, मैंने आपका माइक ऑफ किया है, मतलब ऑन कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से. Yes, ma'am. I was just asking about the icing only, not the other 100%. equipment. Throughout the rehab, for good 9 months, you can go for the icing because whenever you'll do the exercises, वो जो आपके टिश्यूज होते हैं कुछ ब्रेक होते हैं as we already know कि जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हो कुछ ना कुछ फाइबर्स ब्रेक होते हैं, कुछ नया बनता है, सोरनेस होती है, डोम्स होते हैं. For that reason, you can go for the ice pack throughout. Even you can ask your patient whenever he is having a very tight schedule after the surgery, like after a month, after a year or so, still he can use the ice pack. There is no harm. Until Also in second and third grade injuries. Sorry. Sorry to interrupt. We can give in only 3 grades, right? Only? We can give in all the 3 grades. Like even if the person is having second or third grade injury, then too we can give cryotherapy. Yes. There is no. But one thing I have to explain this at this point when you're saying the all 3 grades, surgery के बाद तो it's compulsory because of the inflammation, and you know कि healing का process almost 8 to 9 weeks तक चलता है. We already learn in the पहला ही है हमारे महेश्वरी के चैप्टर में healing में दिया हुआ है, so वो throughout life चलती है. That's different. If you're talking about grade 1, see, most of the people will end up with the stiffness. You have to careful, either your patient is having a pain or he's having a stiffness. If he's having a stiffness, then you have to give him the hot pack or any kind of other modality. But if he's having a swelling, there is a rise in temperature, and at the same time he is complaining for the pain, then you can only go for that. Okay, thank you, ma'am. Next question is from Nidhi Rani. How will our protocol differ in case of ACL injury along with our other ligament like MCL? See, you have to see. What's her name, sir? I'm sorry. Nidhi Rani. Nidhi ji, actually, what happened? Most of the cases, we should not go for what is going to be make difference. You have to understand what you can do, what you should not do. ACL की जो precautions है, like ACL में आपका precaution है कि till 3 weeks you can go for the full ROM after the surgery, right? MCL में as such इतना कुछ भी नहीं है. अगर आप PCL की बात करें, PCL में continuously you have to go for the extension, ठीक है? तो इसमें कुछ भी नहीं change होगा because it's turn out as a proper reconstructional surgery. MCL is basically stand for medial collateral ligament. तो medial collateral ligament का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट्स सपोर्टेड बाय द क्वाड्रिसेप्स. अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, बट द थिंग इज कि इसमें नी बेंडिंग पहले आ जाएगी. एंड द अदर थिंग इज कि इसमें आप जब हॉपिंग करेंगे या इंस्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे वो आपको बहुत पहले मिल जाएगा. देयर इज नो एज सच डिफरेंस, बट हाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ कोई बोनी फ्रेगमेंट तो नहीं है, क्योंकि एमसीएल के साथ कई बार बोनी फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं. इन दैट सर्कमस्टांसेस patient should walk with the cane or walker or any other assistive device for almost like 10 to 18 weeks sometime.